ओके, तो रो रैंक क्या होता है और कॉलम रैंक क्या होता है, लेट अस डिफाइन। हालांकि सिंपली हम रैंक भी बोलते हैं, बट इन द अदर वे, तब एक डिफरेंट तरीके से हम चीजों को डिफाइन करते हैं। एंड लास्टली वी विल से कि रैंक, डिटरमिनेंटल रैंक या रो रैंक एंड कॉलम रैंक आर द सेम थिंग, बट इन द डिफरेंट वे। तो लेट अस डिफाइन। तो पहले हम बात करते हैं रो रैंक क्या होता है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent linearly independent rows of a matrix A is called the row rank of A, and is denoted by this is row rank of A। कुछ इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent rows of a matrix A is called the row rank of A, and it is denoted by this रो रैंक ऑफ ए। क्लियर। तो रो रैंक का मतलब है कि जितना उसके अंदर एल आई वेक्टर्स है, एल आई रो वेक्टर्स है, उतना उसका रो रैंक कहलाता है। इसी तरीके से कॉलम रैंक की अगर हम बात करें, द सेम वे कॉलम रैंक, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम द मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent columns of a matrix A is called column rank of A, and is denoted by row C of A। ठीक। तो क्लियरली जो कॉलम अगर रैंक की हम बात करें, तो इसका मतलब है उसमें अ, जितनी भी रैंक है उतने उसके अंदर लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस की, जिसको हम ऑलरेडी भी नो, बट उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके अच्छे, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म का कैलकुलेट करेंगे, है ना, नॉर्मल फॉर्म कैलकुलेट करेंगे, या रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म कैलकुलेट करेंगे, और उससे हम एलडी और एलआई जो रोज हैं या कॉलम्स हैं उनको हम देख पाएंगे, और उसके बाद हम आसानी से जो है रैंक को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लिख लेते हैं। हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, 3 रोज के ऊपर होते हैं, और जो है 3 तुम्हारे पास कॉलम्स के ऊपर होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन
So, so there are 6 elementary operations. Three of them रो के हैं, एंड 3 जो है वो हमारे पास कॉलम के ऑपरेशन. ओके, तो दीज आर हेयर. तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. तो पहला हम लिखते हैं the following three types of the operation on the row of a matrix called elementary row operations. Number first है कि we are interchange any rows with any row with any other row. Okay, so you can write here the interchange of any two distinct rows of a matrix. समझ रहे हैं ना? So if you are saying कि if the ith row is interchanged with jth row, then it is denoted by this is ith row is interchanged with jth row. ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है दिस आई कामा जे. ओके, तो दिस इज योर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ना. सेकंड क्या होता है? सेकंड में क्या होता है? we can multiply by any row by a non zero scalar, है ना. किसी भी नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आल्सो अ रो ऑपरेशन. so the multiplication of any row by a fixed non zero scalar है ना. इफ वी आर सेइंग कि हम ith रो को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ith row, if ith row is multiplied by k, which
which is non-zero, then it is denoted by Ri is just equal to k times of Ri, और दिस इज और Ri इंटू k। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पहले से पता है, बट लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमारे पास चीजें फिर से रिकॉल हो जाए। नंबर थर्ड कि द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ रो। ठीक है, तो हम किसी दूसरी रो के अंदर कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रो में ऐड करके उससे हम रिप्लेस करते हैं। तो वी कैन जस्ट से द थर्ड ऑपरेशन द एडिशन ऑफ the addition to the elements of a row of fixed scalar multiple of the corresponding elements of another row। You can say कि if we are just say कि k times the element of jth row are added to the corresponding then it is denoted by we are replacing this Ri with Ri plus k times of Rj, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Ri कमा g of k। ओके, तो ये नोटेशंस हैं। तो सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू राइट द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो उसमें भी सेम वे में हमारे पास चीजों को लिखेंगे। तो थर्ड ऑपरेशन में जो हम करते हैं, हम किसी भी रो के अंदर कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया तो दूसरे में ऐड करके वी आर जस्ट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज सी आई इज इंटरचेंज विद सी जे। दूसरा हमारे पास ऑपरेशन है दैट इज इक्वल्स टू कि तुम्हारे पास जो सी आई है किसी भी कॉलम को किसी हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। के इज सी आई वेयर के इज अ नॉन जीरो स्केलर। एंड नंबर थर्ड I'm just replacing this is Ci with Ci plus k times of Cj। So same these three operations we will apply for the column। Okay, so what are the, जब हम ये ऑपरेशन सीख लेते हैं तो इन ऑपरेशंस का जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो बदल जाती है। तो जब बदल जाती है तो दूसरी मैट्रिक्स हो जाती है, मतलब सेम मैट्रिक्स नहीं रहती, बट दीज मैट्रिसेस कॉल्ड इक्विवेलेंट। अगर हम रो ऑपरेशन ही खाली यूज करते हैं और रो ऑपरेशन को यूज करने के बाद
हमारे पास अनदर मैट्रिक्स आती है तो उसको हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम कॉलम ऑपरेशंस को यूज करते हैं तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनती है दैट इज कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं जरा। डिफिनीशन ऑफ द कॉलम इक्विवेलेंट रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, पहले रो इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं। तो केवल और केवल रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम यूज करेंगे तो उसे हम रो इक्विवेलेंट बोलते हैं। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। So let's define it. A matrix a matrix is said to be row equivalent to a matrix if B can be obtained from A by applying in succession a finite number of elementary row operations. Finite number of elementary row operations on A, and we write it like this. This A is रो इक्विवेलेंट टू B, यहाँ पर R लिख दीजिए। ठीक है, तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस क्या होता है? मैट्रिक्स A is said to be रो इक्विवेलेंट to a matrix B if B can be obtained from A by applying in succession a finite number of elementary row operations on A, है ना। हम केवल रो ऑपरेशंस ही अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो अनदर मैट्रिक्स मिलती है that is called row equivalent to A. Okay. Next, we can define similarly the column equivalent if we apply the column operations only. Column equivalent matrices so a matrix A is said to be column equivalent to a matrix B if this B can be obtained from A by applying in succession a finite number of elementary column operations
on A and we write A is column equivalent to B. तो अगर हम कॉलम ऑपरेशन ही केवल लगाते हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स A is said to be column equivalent to a matrix B if B can be obtained from A by applying in succession a finite number of elementary column operations on A. In that case, A is column equivalent to B. So, what are the equivalent matrices? If we get by applying some operations, तो उसे हम equivalent matrices बोलते हैं. So let's define. Equivalent matrices. क्या होते हैं equivalent matrices? If two matrices A and B two matrices A and B are said to be equivalent if one can be obtained from the other by applying a finite number of elementary operations in succession. Then we write simply this is A is equivalent to B. यहाँ पर जब हम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की बात करते हैं तो रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस हम लगाकर, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर हम अनदर मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, दैट इज द कॉल्ड द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट करेंगे, फिर वो एक टुगेदर चीजों की, जैसे कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या